But some people do not even soak their feet in the water, do not even meditate. I mean, I don't know how they are such yogis, I just can't understand. Every day you must soak your feet in the water. Every morning you must beat yourself with shoes. This is a ritual of Sahaja Yoga. But if you do not do it, you should not also be killing yourself for that. But if you have a chance, do it, because that's how you cleanse. That's a part. Not by thinking that I have done soaking of my feet. I was amazed that some people just don't soak their feet, even do not meditate at all, don't do anything. And they are supposed to be Sahaja Yogis. You see, Sahaja Yogis are to be decided by the divine, not by if you become members of Sahaja Yoga, you become Sahaja Yogis. It is to be decided by divine. People think whatever we do, we are Sahaja Yogis. You do not become Sahaja Yogis at all. Those who do not meditate. This is our way of life. You see, as in Islamic rules are that there are shariatis. You see, shariat means the style of life. This is our way of life. Is to keep ourselves cleansed. How we cleanse ourselves. This is bathing ourselves, all those things which are filthy within us, to take them out and do it. That's the main thing. Then you'll be amazed that you won't be wasting your energy in, say, doing your work. You'll be doing your work much better. Because you're wasting all your energy through your brains. One has to understand that there are certain limitations which you have to observe. First of all, I have taken you in my body. A foreign thing has to go in the body. And it has to be looked after, nurtured. But if you become troublesome, then you will be thrown out. I can't bear you. Some people are extremely troublesome. They do not meditate. They have their own ideas about meditation. They do not develop themselves, they do not mature. They live in the past or in the future. And such people are troublesome. A simple thing I had requested you all to put some ghee in the nose, which is a very simple thing but is very important. You all suffer from a very bad hamsa, and one of the things that is a symptom in an AIDS case is a bad hamsa. You will be vulnerable to AIDS. And a small thing like that is not observed. It has to be religious obligation that you must listen to me, whatever I say. Actually, you must obey me. My hand obeys me, my fingers obey me, my feet obey me. What about you, who are raised to the great dignity and the great position of being the yogis in the body of the Adi Shakti, and they are acting as cells in my body. और देने के वक्त में एक बात, सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जिस शरीर से, जिस मन से, जिस बुद्धि से, माने इस पूरे व्यक्तित्व से आप इतनी जो अनुपम चीज दे रहे हैं, वो स्वयं भी बहुत सुंदर होनी चाहिए। आपका शरीर स्वच्छ होना चाहिए, शरीर के अंदर कोई बीमारियां नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बीमारी है, बहुत से सहयोगियों में ऐसा भी होगा कि उनके अंदर अगर शारीरिक बीमारी है तो सहयोग से पहले तो बहुत कहते हैं कि साहब मेरी ये बीमारी है, वो ठीक होना चाहिए, वो बीमारी ठीक होना चाहिए, लेकिन सहयोग के बाद में इतना चित्त नहीं रहेगा बीमारी को। अरे हो जाएगा ठीक, चलो ठीक है, ये बात गलत है। आपको कोई सी भी जरा सी भी तकलीफ हो जाए, आप फौरन वहां हाथ रख के अपनी तबीयत ठीक कर सकते हैं, अपनी फिजिकल साइड बहुत साफ रख सकते हैं। बहुत ज्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्नान करना और स्वच्छता से रहना और अपनी फिजिकल साइड ठीक करना।
लेकिन उसके लिए मैंने एक चीज का कहा कि जैसे सवेरे कहते कि सबको बाथरूम जाना चाहिए, मुख साफ करना चाहिए, तो सहज योगियों के लिए सोने से पहले पानी में बैठना 5 मिनट अत्यंत आवश्यक, वो चाहे कोई भी हो। आप बड़े पहुंचे हुए हो, आपका हमें नहीं पकड़ता, ये इससे मतलब नहीं है। आपको 5 मिनट पानी में बैठना चाहिए। आप लोगों को ये आदत लगे इसलिए मैं जबरदस्ती बैठती हूँ कभी कभी कि चलो मैं भी पानी में बैठती हूँ तो मेरे सहयोगी बैठेंगे। ये आदत बहुत ही अच्छी है। एक 5 मिनट पानी में सब सहयोगों को बैठना चाहिए। फोटो के सामने दीप जला करके, कुंकू वगैरह लगा के, फोटो के सामने दोनों हाथ रखे, दोनों पैर पानी में रख के सब सहयोगियों को बैठना चाहिए। आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ये करें। चाहे कुछ हो जाए, आप 5 मिनट की कोई मुश्किल नहीं है। सोने से पहले पानी में सबको बैठना चाहिए। इससे आपका जो है आधे से ज्यादा पकड़ना खत्म हो जाएगा।